Hello everyone, welcome to PT Reading Filling the Blanks Real Exam Question Series. This is 49th video in this series. It means that we have already discussed 48 real exam questions जो students को real paper में आए हुए हैं. So if you can apply the same strategies, tips and hacks, and you can also solve them quickly using our strategies. So let's get started. First things first, now PT is accepted in UK and 90% of Canadian universities now accept PTE Academic, and a new test, which is PTE Home, has started for the family visa in the UK. My name is Bhrat Brij and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PTE. Now students often ask me this question, so can we also achieve our target score, or if we can score like you? The answer is big yes. If you follow the same strategies and the same tips and tricks, you can also achieve your target score in your next attempt. Whatever your target score, you will be able to achieve it if you are following our strategies. So that's why do not forget to subscribe to our channel, because we post such informative videos regularly. PT reading integrated section होता है where it is of 32 to 41 minutes, and time management आपको खुद करनी होती है, and it is not scored out of 90, it is scored out of 47 to 48 or 49 marks, right? And it has 5 question types. The second last question type is today's video's topic, which is reading filling the blanks. And this is the real scoring. As you can see, the reading module is of 47 marks, and the today's topic, which is reading filling the blanks, are of total 15 marks. It means that if you are getting 5 RFIBs, they will be of 3 marks each. So they are very important, especially if you are looking for 7 bands or 8 bands. It's quite important that you should follow and pay attention to the strategies, how to solve them. Now, what is our strategy? Based on big data analysis, we found out that you can maximum spend of 2 to 2.5 minutes on your reading filling the blanks. अब in 2 to 2.5 minutes में क्या आप सारे words पढ़ सकते हो? Can you understand their meaning? The answer is no, because you do not have sufficient time, and what you need to do is you need to learn the art of skimming. And we teach our students when they are in our institute or taking online coaching from us how to skim it. And this is today's topic. As usual, I'm going to give you 30 seconds, and after 30 seconds, we are going to get started. Okay. Okay. So I'm back. So now you know that first thing we are going to do is we are going to skim. We are going to skim for its tone, right? Tenses, gist, टोन पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है, न्यूट्रल टोन है, टेंसेस पास्ट टेंस यूज हो रहे हैं, फ्यूचर टेंस यूज हो रहे हैं या प्रेजेंट टेंस यूज हो रहे हैं. जिस्ट मीन्स ओवरऑल आइडिया, कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये किस बारे में है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द skimming. While workers worry about whether robots will take their jobs, teachers are wondering how to use education to insulate the next generation from such a fate. This something before. When the last wave of automation swept the developed world at the start of 20th century, policymakers decided education was the answer. If machines were going to substitute for brawn, something more people would need to use their brains. The US invested something in education with good results. Workers reaped the benefits through better jobs and higher wages. Economists summed it up like this: the Industrial Revolution, something a race between technology and education, and for the most of the 20th century, humans won the race. Okay, so basically आपके यहाँ पे जो आजकल सिनेरियो भी है उसके बारे में बात हो रही है, एआई के बारे में, रोबोट्स के बारे में, क्या वो ह्यूमंस की जॉब ले लेंगे. एंड देन दे आर सेइंग कि पहले भी हो चुका है ऐसा, बिफोर मीन्स हो चुका है ऐसा. तो उन्होंने क्या एजुकेशन में किया इन्वेस्ट. ओके, जैसे यूएस ने इन्वेस्ट किया और अब उनको बेटर जॉब्स मिल रही थी, बेटर वेजेस मिल रही थी.
Now I have put a star mark on this word, which is brawn. Brawn is a new word for your vocab. Remember, we have to increase our vocabulary also for reading section. So brawn is like जिसको हम physical effort कहते हैं, जिसमें mental skills की usage इतनी नहीं होती है. Okay, so you can remember this word, you can note down this word separately because it's quite a new word for most of you. Now the second thing we do is parts of speech classification of options. Yes, जो options दिए हुए हैं, these are the options. We are going to do parts of speech classification for those now. So has worked, okay, क्या है, एक तरह से ये verb है, has worked. अब इसमें आपका has एक auxiliary verb है और worked, so ये कहीं पे आ सकती है जहां पे आपका verb missing होगी, वहां पे ये fit हो सकता है. heavily एलवाइज हैं, बहुत इजीली है, ऑलवेज एडवर्ब होती है. दे रीजनड, ओके, उन्होंने रीजन किया. स्टार्टेड, अब स्टार्टेड आपका एक तरह से आप वर्ब ले सकते हो, पास्ट टेंस हो सकती है स्टार्ट का. स्टॉप, अगर स्टार्ट है आपकी वर्ब तो स्टॉप भी वर्ब ही होगी. दे रिलाइड, जैसे दे रीजनड है वैसे ही दे रिलाइड. दे क्या होता है हमारा जनरली सब्जेक्ट, रिलाइड क्या है वर्ब. तो जहां पे आपका सब्जेक्ट और वर्ब मिसिंग है उनमें हम इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे. हायर, कंपैरेटिव है तो एडजेक्टिव यूज हो सकता है. हैव वर्कड, जैसे हैज वर्कड है वैसे ही हैव वर्कड है. तो जहां पे आपकी वर्ब्स मिसिंग है वी आर गोइंग टू follow it. So now let's see the blank. Okay, always remember we first apply the grammar rules and after that we try to solve things. Okay, so this something before, यहाँ पे ब्लैंक है, सेंटेंस पूरा हो रहा है. इफ यू हैव अटेंडेड आवर ग्रामर लेक्चर्स यू नो दैट एसवीओ इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज एसवीओ? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे दिस क्या है? दिस एज अ सब्जेक्ट है. वर्ब क्या यहाँ पे है प्रेजेंट इस सेंटेंस में? नहीं है. तो अब आपकी जो वर्ब्स हैं आप यहाँ पे फिल कर सकते हो. ओके, लेट्स सी द ऑप्शंस. सो दिस हैज वर्कड बिफोर, दिस स्टार्टेड बिफोर, नहीं स्टार्ट नहीं होगा. दिस स्टॉप्ड बिफोर, पहले क्या बंद हो चुका है, नहीं हुआ. अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, राइट. हैव वर्कड, व्हाई आई एम नॉट सिलेक्टिंग दे रिलाइड एंड दे रीजन? बिकॉज इसमें आपका एक सब्जेक्ट भी है. वी आर जस्ट लुकिंग फॉर वर्ब बिकॉज सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारा यहाँ पे है. सो यू आर लेफ्ट विथ टू थिंग्स. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. तो अब आपके पास ऑप्शन है या तो हैव वर्कड आएगा या हैज वर्कड आएगा. Now another important concept of grammar which is subject verb agreement. अब उसके basis पे how you are going to solve it. This has worked before और this have, this है, this क्या है? Singular है. These होता तो आप क्या यूज कर सकते थे? Have. अब this singular है तो has भी आपका singular होता है. So answer क्या होने वाला है? This has worked before. Okay. So we are going to select it. See, if you know the correct grammar rules, it will be very easy for you to solve the reading filling the blanks. Now next thing. If machines were substitute for a brawn, अब क्या आपको बीच वाला sentences पढ़ने की जरूरत है? As if now नहीं. Depending upon our strategies, you do not need to go through this. Something more people they need to use their brains. अब यहाँ पे देखिए क्या, अब एक सिंपल सी बात है. अगर अब आपके पास दो कॉमर्स दिए हुए हैं तो आप क्या लुक करते हैं? सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं अपने पैसेज में? साइन पोस्टिंग वर्ड्स, अनदर रूल ऑफ आवर ग्रामर. अब क्या आपको यहाँ पे कहीं पे भी साइन पोस्टिंग वर्ड्स दिए हुए हैं? द आंसर इज नो. अब वी हैव टू लुक फॉर समथिंग एल्स, राइट. If machines was going to substitute for physical labor, something more people would need to use their brains. अब यहाँ पे क्या आंसर फिट होगा? Contextually सिर्फ दो आंसर फिट हो सकते हैं. क्यों? यहाँ पे अब आपका एक सब्जेक्ट भी होगा. रिमेंबर कॉमा है. कॉमास कहाँ यूज होते हैं? क्लॉजेस के बीच में, राइट. सो अगर दो कॉमा है या तो साइन पोस्टिंग वर्ड हो सकता है या क्लॉज हो सकता है. अब क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, राइट. सो बेस्ड ऑन दैट, अब आपको अगर ये ग्रामर का रूल पता है, ये कॉमास के बीच में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब किस में दिया हुआ है? इन दोनों वर्ड्स में. दे रीजनड और दे रिलाइड. ओके, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब. सो ये क्लॉज बन रहा है एक. ओके, सो अब इनमें से कौन सा फिट होगा? सी, इफ यू नो देन यूजिंग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यू and easily eliminate all other options because कहीं पे भी आपका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इकट्ठे नहीं दिए हुए हैं. सो यहाँ पे अब आंसर क्या होगा? दे रीजनड और दे रिलाइड. कंटेक्चुअली क्या फिट होगा? दे रीजनड. ओके,
So this is going to be the correct one. Now let's move on to the next one. The US invested something in education. अब invested क्या है? हमारी verb है. Verb के बाद blank होता है या verb से पहले एकदम blank होता है, तो आपको पता होता है क्या fill करना है. Again grammar rule which is adverb. अब हमारे पास कितनी adverbs हैं? सिर्फ एक ही है. The US invested heavily in education. So that's why, see, we are simply solving the answers just on the basis of grammar. Okay, grammar के rules आपको पता होंगे. You can easily solve them. The Industrial Revolution dash a race between technology and education. अब रेस क्या होती है? दो लोगों के बीच में स्टार्ट होती है, राइट? स्टार्टेड अ रेस, स्टॉप नहीं हो सकती है. अब तो रेस ऑब्वियसली और बढ़ने वाली है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के बीच में. अब बाकी आपके कंटेक्चुअली भी फिट नहीं होंगे. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन started a race between technology and education. So let's see now if all the answers are correct. Yes, all the answers are correct. So you see, if you follow our strategy, you can easily solve your reading filling the blanks. Our reading strategy is based on context, lexical resource, and grammar. Context mein we pay importance to skimming, forward reading, backward reading, and tone. For lexical resource, we have collocations. You have seen phrasal verbs also, and vocabulary. We have learned a new word today which was brawn. And in grammar, we have a complete grammar course where we teach parts of speech classification. You have seen its importance. Then subject verb agreement. This year, these wala difference we had seen. So this is important also. Prepositions, modals, articles, determiners, signposting words, tenses, irregular verbs or plurals, British English rules, and sentences. All these we teach as a part of grammar. And reading without grammar, it's not possible to crack it. And grammar course, this grammar course is going to help you in your writing as well as speaking. Always remember, you have 2 to 2.5 minutes. In those time, in first 30 to 60 seconds, you are going to skim the content. If possible, do parts of speech classification also. And in the next 90 to 120 seconds, you can use the strategies and do process of elimination. And all the strategies which we teach are validated and proven strategies. The proof is in the ticker below. You can see so many students of ours have achieved their target score. So if they can achieve their target score, you can also achieve it. And if you have any questions or doubts, you can WhatsApp us at 8699121121 if you want to take online coaching or in-institute coaching. But do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. We give wings to your dreams.